Do you hear me? Yes, sir. Again, I lost. Yes, sir. The whole class was actually just disappear. The whole class. I think it is Yes. due to a duration. We have got a fixed duration, and beyond that, when we move, so it creates problems. Anyhow, Yes, what was sir. the slide that I was talking about? Slide Sir, number may I 5. ask one question, sir? Yes. It is a bit, sir, it is a bit critical, but let me ask it. सर जैसे कि हम बोलते हैं कि ये जो सच है ये झूठ की वजह से है मतलब Mm-hmm. if there was not even the lie then there will be no truth. So Mm-hmm. isn't we are unintentionally proving that truth is important? Isn't we are like aren't we proving this thing that the day is important than the night? Like अगर night न होती तो हमें day का पता नहीं चलता तो हाँ we are हाँ. unintentionally like creating binarism. Like yes, the truth is important. Yes, the day is important. Mm. तो ये Okay. हम unintentionally चाहते. Yes sir. देखो, time and again I tell you that these are not my views. Okay. These are actually the views of, for example, in case of structuralism, the views of Ferdinand de Saussure, and in case of post-structuralism, the views of Jacques Derrida. Is it clear? अच्छा, उनके अंडरस्टैंडिंग के Yes sir. मुताबिक उनके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक क्या है? उनके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक देयर इज नो रियलिटी. मैं जो कहता हूँ कि रियलिटी है, दे आर ऑफ द व्यू दैट देयर इज नो रियलिटी है. जब वो ये कहते हैं कि रियलिटी इज गिवन बाय लैंग्वेज, this whole meaning is given by language, so it means that there is no reality, जिसको आप reality कहते हैं. इसलिए मैं कहता हूं कि these are not my views. अच्छा, पोस्ट मॉडर्निज्म में जब आप जाएंगे, there is a famous feature and a very prominent feature of post modernism. उसमें वो क्या कहते हैं? For example, Baudrillard है या Lyotard है, they are of the view that there is no truth, rather there are truths. एक सच नहीं है बल्कि कई सच हैं. There is no religion, बिल्कुल सर rather there exactly. are religions. Okay. सर ये हम इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं लाइक इज इट एप्लीकेबल कि हम अपने ही तरफ से कोई क्रिटिसिज्म करें कोई थ्योरी पर जैसे कि अभी मैंने ये तो ये क्वेश्चन किया सब्जेक्टिव जो है ना, ये सब्जेक्टिविटी, इट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड इवन ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, दैट यस सर हम it is not अथॉरिटेटिव necessary है नहीं लेकिन क्या कर सकते हैं it is सर not एग्जैक्टली. necessary it is not necessary to depend on the meaning of the writer. Rather, every reader has his own understanding. तो बिल्कुल उस वजह सर. से जो है, then we can think about the possibility of the subjectivity है, कि meaning जो है, it is not objective, rather it is subjective. You can give one meaning to one signifier, I can give a different meaning to the same signifier. It is possible, and this is the main feature of post-structuralism and postmodernism. तो इस डोमेन में जो है फिर हम हकीकत की बात करते ही नहीं है. We do not talk about truth, we just talk about subjectivity. This truth is actually relative. When we say that something is absolute, तो वो तो जिस तरह true है, so true is absolute, true means true. लेकिन जब हम कहते हैं कि it is relative, it means that it is one thing for me and it is a different thing for you, and it is absolutely a different thing for a third person. Is it बिल्कुल clear? सर बिल्कुल. Yes, any other बिल्कुल सर question? मोर देन क्लियर. Other participants, if they have any question about post-structuralism, they can ask. Sir, I have no question and the rest of them are just silent. Because it is a bit technical, this post-structuralism, and I discuss Yes sir, a bit critical and technical. क्योंकि ये जो है, this is something like a foundation. इसी बुनियाद पे जो है बाकी जो theories है, feminist criticism है, Marxist criticism है, especially psychoanalysis, ये सब कुछ जो है, they have been that building of the theories that has been erected on the basis of structuralism and post-structuralism. इसलिए बिल्कुल जो है, सर. I give you the examples from feminist criticism and Marxist criticism and post-colonial theory, and even I'll be giving you from the examples of
psychoanalysis, वहां पे भी जो है the role of language, that is too important. When I will discuss psychoanalysis, so you have to recall the same points of this linguistic discourse, जिसमें what is the status of language, what is the status of reality in terms of language, and what is the relationship of language and reality है. ये आपने जो है उसको रिकॉल करना होगा. सर बिल्कुल सर बिल्कुल. Okay, so I think we should wind up our discussion. बिल्कुल sir. The rest of the students are, I don't know whether they are present here or not, So because they are many, not even saying. I have explained slide number fifth, Yes sir. slide number 5. Yes, this I have explained. Yes sir, 5 number. Sir, I have a question, please. Yes. It means that, sir, structuralism and post-structuralism. For structuralism, both reality and the representation of reality are constant, right? And in post-structuralism, both the representation of reality and reality, they are constantly changing, right? Yes. So the main difference is that the reality and the signifier, they are getting changed. So is this the main difference? No, the main difference is that in structuralism, it was said that reality is a social construction, okay, in terms Yes. of certain structures. Yes. Acha, or then it Sir, was structuralism में क्या reality constant नहीं है, like नहीं, static नहीं है, अब जितना भी. let me explain it. नहीं, उसमें तो जो Okay. स्टेबिलिटी की तरफ इशारा दिया गया था कि it is stable. For example, in terms of binary opposition, that is a feature of structuralism. तो उसमें क्या है कि there is a Yes. positive value and there is a negative value. अच्छा, वो positive and Yeah. negative value की जो relationship है, that is constant. It seems as Okay. According to structuralism. this relationship is constant. लेकिन ये constant Okay. नहीं है. ये क्या है, एट अ सर्टन स्टेज, अगर किसी एक दौर में, उस एक दौर से मेरा मकसद है 100 साल, फॉर एग्जांपल 100 सालों में जो है अगर आपको वो स्टेटस कांस्टेंट नजर आता है, दैट इज ओनली फॉर दोस 100 इयर्स. उन 100 इयर्स के बाद जो Okay. है दैट रिलेशनशिप चेंजेस. बिल्कुल सर. अच्छा, अब वी कम टू एक्चुअली लिटरेरी स्ट्रक्चरलिज्म. जो 5 कोड्स का मैंने आपको जिक्र किया, सो ये वो 5 कोड्स नहीं है कि those 5 codes, these are all the codes that we have. बहुत से ऐसे इन नंबर ऑफ एन एंडलेस लिस्ट ऑफ कोड्स वी हैव, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी अरेंजमेंट के लिए वी कंसिडर दोस 5 कोड्स. तो हमें ऐसे नजर आता है कि दिस इज अ स्टेबल थिंग, दैट दिस 5 कोड्स दे आर स्टेबल. हालांकि ये स्टेबल नहीं होते हैं, वक्त के साथ साथ जो है ये कोड्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन या तो हम उस दौर में नहीं होते जब वो चेंज हो चुके होते हैं. तो दौर से मेरा मकसद Okay. 5-10 साल नहीं है, बल्कि ये क्या है, it is a wider range of duration. So for a certain age, that age might be of 100 years, that age might be of 200 years, that stability Yes. remains. But after that, there is no such stability. तो हम कह सकते हैं कि there is no stability है. Rather there is a change. लेकिन structuralism में जो है, अगर आप देख लें 5 codes को, so उसमें stability सिर्फ इस हद तक है कि आप जो है, you have 5 codes and you can interpret any narrative in the light of those 5 codes. This is stability है. You have 6 elements in Okay. terms of Grimus model. आपके पास 6 elements है और you can interpret any narrative in the light of those 6 elements. Or in terms of Okay. prop, you have 100 Like sir, functions. structuralism have like structuralism has some delimitation, some देखो, limitations, and स्ट्रक्चरलिज्म जो some है, boundaries. स्ट्रक्चरलिज्म गिव्स यू सर्टेन रूल्स. वो आपको रूल्स देता है. अच्छा, रूल का फंक्शन पर क्या है कि वो किसी हद तक जो है इट हैज स्टेबिलिटी है. आप उन रूल्स के मुताबिक जो है यू कैन इंटरप्रेट. अच्छा, दैट पुट्स सो मेनी थिंग्स इनटू जस्ट अ फ्यू रूल्स. स्ट्रक्चरलिज्म ये करता है कि बहुत सी चीजें आपको जो है वो एक डिब्बे के फॉर्म में दे देता है, जिस डिब्बे में आपके पास रूल्स हैं. That there are so many rules, but out of all those rules, there are certain rules which you can use in order to interpret a text. Post structuralism में ये नहीं है. Post structuralism में क्या है? पहली बात, its attack was on the binary positions. Binary position में क्या था? There was a center, and everything was compared with that center.
नेगेटिव वैल्यू वाज कंपेयर्ड विद द सेंटर. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बल्कि deconstruction का जो अटैक था that was on the binary oppositions, that there is no center. For example, compare night with the day. Day की understanding जो है we have only because of the presence of night. Our Yes. understanding of the white color, that is possible only with the help of the black. अगर black ना होता so whiteness की जो importance है, significance है, that would not have been possible. So So जो means that, sir, one another is complementary, like yin yes yang they theory. are, yes they are complementary है. तो जब Yeah. complementary है तो फिर importance एक category की क्यों है कि आप एक category को ज्यादा Yes. importance देते हैं? Got It it. means that both are equally important. Sir, post structuralism is actually criticism on the structuralism. It is a counter discourse to the, I guess, the structuralism. Right in the beginning, I said that we can take it in two ways. We can take it as an extension of structuralism. यानी बाज बातों में जो है लैंग्वेज की बाज बातों के लिहाज से जो है इस स्ट्रक्चरलिज्म को एक्सटेंड किया गया इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, लेकिन बाज बातों के लिहाज से जो है इट वाज अ रिएक्शन टू स्ट्रक्चरलिज्म. जिस तरह बाइनरी अपोजिशन पे जो अटैक हुआ, सो दैट वाज एक्चुअली अ रिएक्शन टू द व्यूज ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. Okay, sir. Thank you. Okay, thank you. Should we conclude the session? Yes, Yes, sir. sir. Okay, thank you.